गुड आफ्टरनून दमन। तो कल हमने जो सेक्शंस करे थे उनका मैंने कुछ डिक्टेशन वाला पोर्शन देना है आज। केस लॉज वगैरह जो भी थे, जो मैंने आपको एग्जांपल्स देने को बोला था वो मैं आज दूंगी। खत्म करते ही विल स्टार्ट विद 45। समझ हम चुके हैं। फटाफट 37 ऑनवर्ड जो काम है वो लिख लो, ठीक है। 37 का डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी और ऑफ डिफरेंट डिस्क्रिप्शन के बारे में लिखना शुरू करो। इफ देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट, इफ देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट for delivery of for delivery of specified quantity of goods, specified quantity of goods, comma, then the seller then the seller is duty bound to then the seller is duty no problem is duty bound to deliver। कल वाला लेक्चर लगाया था परनीत, उसकी डिक्टेशन चल रही है, ठीक है। इस ड्यूटी बाउंड टू, अब उसको उनको बता देना कितने 3-4 लाइनें हुई है, 2 लाइन छोड़ देना बस, अगर अभी से लिख पाते हो तो। इस ड्यूटी बाउंड टू डिलीवर द गुड्स in accordance with the in accordance with the terms of the contract. Section 37 dictation. In accordance with the terms of the contract. First off, in case the seller delivers less quantity then the buyer has a right then the buyer has a right to reject the goods or he may accept the less quantity and will have to pay at, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रही है ना इसमें, है ना। इसकी वो करानी पड़ेगी फ्रोस्टिंग ग्लासेस की ना, हाफ चाहे हो जाए होनी चाहिए, नीचे हाफ लोअर हाफ की ना फ्रोस्टिंग हो जाए तो बेटर। हाँ चाहिए, कुछ चाहिए। हाँ वरना तो मजा आ रहा है बाहर देख के, मतलब आई डोंट नो, डिस्ट्रैक्शन हो जा रही है बार बारी। He may accept the less quantity and will have to pay at the contract rate. So, the buyer's right of rejection is subject to the rule de minimis। हम आईपीसी में देखते हैं सेक्शन नंबर 95, नहीं वो तो ट्रिवियल, हाँ डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स में भी देखते हैं ना। हाँ ट्रिवियल वाला है ना, तो डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स, QRAT D minimus non curat lex, which implies that law does not take trivial deviations, वही है उसमें, ये मैक्सिम होती है सेक्शन 95 आईपीसी की भी, ठीक है। ट्रिवियल डिविएशंस, छोटी डिविएशंस इनटू अकाउंट therefore if there is slight deficiency
if there is slight deficiency in the goods, comma, it must not be taken into consideration. It must not be taken into consideration. Next paragraph. In case the seller delivers larger quantity, in case the seller delivers larger quantity, then the buyer, then the buyer has an option to accept the goods. Then the buyer has an option to accept the goods included in the contract, or may reject the rest, or may reject the rest, or he may reject the whole, or he may reject the whole. The word description रखना inverted commas में. The word description is to be interpreted strictly. Interpreted strictly, and it refers to a class, comma, kind or sort. Class, comma, kind or sort, SORT. The words mixed with, the words mixed with को रखना inverted commas में again. The words mixed with used under section 37 clause 3, used under section 37 clause 3 mean accompanied by, mean accompanied by को भी रखो inverted commas में. This subsection entitles the buyer to accept the goods which are in accordance of the contract, and reject the rest, only when the goods are of a different description. But if the goods of the description ordered are delivered, डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रही है? मैं आवाज पीछे बंद करूं क्या दरवाजा? इज इट फाइन? समझ आ रहा है ना क्या बोल रही हूँ? क्लास इज टू लार्ज, आई मीन ऐसे लग रहा है क्लास बहुत बड़ी है ना? खाली खाली ज्यादा लगती है क्लास, और आवाज भी ज्यादा गूंजती है. Only when the goods are of a different description, but if the goods of the description ordered are delivered, but if the goods of the description ordered are delivered, but some of them are of inferior quality, comma, the case is not within this subsection. कल भी बताया था. Case is not within this subsection. Full stop. In such a case, the buyer has the remedy to accept all or reject all. The buyer has the remedy to accept all or reject all. चल जाएगा केवी टेम्पटर वाले जगह, ठीक है ना? केवल पॉइंट. हाँ, हमने वो नहीं कराया था कि यार अगर 10 बनारसी सिल्क साड़ी में आई तो बनारसी सिल्क के बट इंफीरियर क्वालिटी के, उसको मिक्स डिस्क्रिप्शन नहीं मानते. वो वाले पॉपुलर पॉइंट है सारे.
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट केस लॉ लिख लो इसके नीचे प्लीज। मूर, MOORE, मूरे या मूर जो भी बोलोगे, MOORE एंड कंपनी वर्सेस लैंडोवर, लैंड AUER, लैंडोवर एंड कंपनी, 1921. There was a contract with respect to 3,000 tins. There was a contract with respect to 3,000 tins of canned fruit, CANNED, canned. 3,000 tins of canned fruit. Full stop. It was decided that the tins were to be packed in containers. With each container containing 30 tins. Here, many containers had 30 tins. But some had only 24 tins. Here it was held that the goods are not completely as per the description. That is, they are of a mixed description. समझ आ रहा है क्या चल रहा है? समझ आ रहा है? मैं समझा देती हूँ, पहले लिख लो पूरा. That is, they are of a mixed description and the case falls under 37 clause 3. ठीक है. अब इन्होंने क्या करा इस केस में, इन्होंने बोला यार देखो, हमने आपको डिलीवरी के टाइम पे बोला ऑल द पैकेजिंग हैज टू बी डन इन 30 के पैक्स. एवरी पैकेट शुड हैव 30 थिंग्स. एवरी पैकेट शुड हैव 30 टिन्स, राइट? ये बात हो चुकी है. व्हाइल यू आर पैकिंग देम, आपने कंपनी आपकी पैक करके 24 के बना देती है. कई 30 के भी हैं बट कई 24 वाले भी हैं. तो क्या हम मानेंगे, क्या इसे मिक्स डिस्क्रिप्शन माना जा सकता है? इज द क्वेश्चन. द आंसर इज यस, देयर इज नो इंफीरियर क्वालिटी इन्वॉल्वड. ठीक है, बट पैकिंग में प्रॉब्लम है. जो हमने सेट्स बेचने थे, सेट्स में प्रॉब्लम आ गई है. वो 24 के सेट बन गए हैं तो माना गया 30 वाले सेट्स भी और 24 वाले भी हैं, इसलिए मिक्स्ड डिस्क्रिप्शन की कैटेगरी में से डाल देंगे और मिक्स्ड डिस्क्रिप्शन वाले रूल 37 के क्लॉज 3 वाले यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएंगे. ठीक है, क्या हुआ अपनी? आगे चले. नेक्स्ट, नहीं मिक्स क्वांटिटी ट्रीट करेंगे, वही तो बोल रही हूँ. इसमें 3 चीजें है ना, लेसर, मिक्स्ड, एक्स्ट्रा. लार्जर, लेसर एंड मिक्स्ड. तो देखो ना, लेस तो नहीं है, मिक्स है. कईयों में 24 डाल दी लेकिन पेटियां ज्यादा बना दी ना. ये नहीं कहा कि पेटियां कम है, ये तो नहीं कहा ना. हमने सामान तो आपको उतना डिलीवर कर दिया, बस डिलीवरी में प्रॉब्लम कर दी, पैकेजिंग में प्रॉब्लम कर दी, मतलब डिस्क्रिप्शन में प्रॉब्लम हो गई है ना. जो मांगी थी एग्जैक्टली वो चीज तो कई नहीं आई है, कई आ गई है, इसलिए हमने इसको मिक्स में डाल दिया. इसको ऐसे उस एंगल से देखो. ठीक है, वरना अगर पूरी ना होते, नंबर ऑफ आर्टिकल्स पूरे ना होते तो हम उसको डाल देते लेसन में. ठीक है, नेक्स्ट. नेक्स्ट केस, निकलसन, NICOL versus Bradfield, BRADFIED, Bradford Union. (1866) ऊपर वाले का 1921 लिख लिया. Buyer ordered 15 tons
buyer ordered 15 tons of रुआबन, RUABON, कोयले की टाइप है ये, ठीक है, RUABON, रुआबन coal. Here 7 tons was delivered as per the agreement. Here 7 tons was delivered as per the agreement, but the rest of 8 tons was of very inferior quality. Was of very inferior quality. So here the case does not fall under. Here the case does not fall under section 37 clause 3. Buyer has two options, either to accept whole or reject whole. ठीक है, नेक्स्ट 38 के बारे में लिख लीजिए प्लीज. प्राइस एंड डिलीवरी, 38 इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज के बारे में. प्राइस एंड डिलीवरी आर नॉट टू बी कंसिडर्ड, फ्रॉस्टिंग का काम होने लगा, आर नॉट टू बी कंसिडर्ड फॉर पासिंग ऑफ ओनरशिप, फॉर पासिंग ऑफ ओनरशिप. They can be immediate, in installments, or on a future date, or on a future date. एक नेक्स्ट लाइन बना लो. The seller and buyer when enter into a contract, when seller and buyer enter into a contract, delivery by the seller and payment by the buyer are concurrent conditions, are concurrent conditions. In case it was decided, that the goods will be delivered in installments, and seller misses one installment, comma, whether it will give the right to the buyer, to repudiate it will depend on the facts and circumstances of each case. Next paragraph. If parties expressly made
expressly made time of payment as the essence of the contract. Time of the payment as the essence of the contract, then it will be considered as a breach of condition. Then it will be considered as a breach of condition if the buyer does not pay on time. If the buyer does not pay on time, there, there, the seller can repudiate plus can claim damages. Plus can claim damages. Next paragraph. Where time was not the essence, where time was not the essence, seller cannot repudiate. Seller cannot repudiate. Stop. He is responsible. He is responsible to make future deliveries. He is responsible to make future deliveries. Full stop. Buyer can claim damages. Buyer can claim damages for missed deliveries by the seller. For missed deliveries by the seller. हमने क्या पढ़ा है, हमने बेसिकली जो लिखा है वो ये लिखा है कि यार क्या वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट, अगर मैंने कोई चीज इंस्टॉलमेंट में डिलीवर करनी थी, अगर मैंने एक इंस्टॉलमेंट मिस कर दी, क्या दूसरे पास बंदे के पास हक आ गया कि वो सारा कुछ रेप्यूडिएट कर पाए? ये डिपेंड करेगा फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस पे। जैसे कि कई चीजों में जब टाइम एसेंस है और टाइम पे डिलीवरी नहीं हो रही है, टाइम ही एसेंस बना दिया गया था, हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाते कि यार पहली तारीख को भेज देना ताकि मैं 4 तक आगे काम कर पाऊँ उसका, है ना? अगर उसका टाइम ही एसेंस था, ठीक है, और टाइम से हमने पंगा ले लिया, तो ब्रीच ऑफ कंडीशन हो जाएगा। ब्रीच ऑफ कंडीशन होते ही वो आपका उधर चल जाएगा कि रेप्यूडिएट भी करेंगे, डैमेजेस भी मांगेंगे। लेकिन अगर बोला अगर टाइम सेंस नहीं है और डिलीवरी इधर उधर हो जाती है, ठीक है, अगर टाइम में सेंस नहीं था, ठीक है, तो हमने बोला अगर तो डिलीवरी इधर उधर हो भी गई है तो कोई चक्कर नहीं है, आप जो डिलीवरी मिस हुई है उसके उसके डैमेजेस क्लेम कर लो, बाकी सामान ले लो, ऐसे करें। ठीक है, आपको एग्जांपल देने लगी हूँ, प्लीज राइट डाउन फर्स्ट एग्जांपल। एक्चुअली अब होगा क्या, पेपर में इसमें से इलस्ट्रेशन में से आएगा कुछ, इसके बाहर ऐसा कुछ आएगा नहीं। एक दो इलस्ट्रेशन, एक दो केस लॉस दिखा दूंगी, ठीक है। A and B enter into a contract for delivery of 300 kgs of rice। 300 kgs of rice। यहाँ पे धूप आती है क्या इसके अंदर, इस इसके यहाँ इस एरिया में? गर्मियों में नहीं आएगी, ट्रैप हो जाएगी ना यहाँ पे, हीट ऐसे होगा, धूप नहीं आएगी डायरेक्ट। ठीक है, फिर तो बेटर है। गर्मियों में, गर्मी में बेटर नहीं रहेगा। मुझे लग रहा है इनको वो लगवाने पड़ेंगे जो स्टैंडिंग फैंस नहीं होते, तो वरना तो कैसे बैठेगा, कैफेटेरिया किस काम करेगा अगर कोई बैठ नहीं पाएगा। ह्यूमिडिटी बुरा हाल, काफी रहती है। शोर, अच्छा, ओके। A and B 300 kgs of rice, which was who's क्या लिखा है पूरी लाइन बता दो प्लीज एक बार। Rice which was to be delivered in 3 installments, which was to be delivered in 3 installments। B was to B was to pay price before every installment, before every installment,
and a time limit was set. And the time limit was set. If B does not pay, if B does not pay, it would amount to breach of condition. It would amount to breach of condition because time was the essence of the contract. Because time was made the essence of the contract. Seller can repudiate the whole contract in such a case. Seller can repudiate the whole contract in such a case and can even claim damages. And can even claim damages. But if the first delivery has been done and the price is paid, and the price is paid, comma, that cannot be repudiated. That cannot be repudiated. Next paragraph. Same example. Say next example. A and B enter into a contract for 300 kgs of sugar. A and B enter into a contract for 300 kgs of sugar, which was to be done in two installments. Was to be done in two installments of September and October. Of September and October. Price was to be paid. Price was to be paid by B after receiving deliveries. After receiving deliveries. Full stop. First installment was delivered by A in September. First installment was delivered by A in September. But B did not pay. But B did not pay. Here, it did not amount to breach of condition. Pay. Here, this did not amount to breach of condition because time was not the essence. Because time was not the essence. Time of payment was not the essence. And the October's delivery was in no way connected to the delivery of September. To the delivery of September. केस लॉ इसी के हाइफन डाल के लिख लो रैश RASH या रश जो भी बोल दो RASH बेहारी BEHARY बेहारी BEHARY वर्सेस नृत्य गोपाल वर्सेस नृत्य NRITTYA नृत्य गोपाल 1906 कैलकाटा हाई कोर्ट. नेक्स्ट केस लिख लो आर्यवर्त ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड न्यू दिल्ली वर्सेस आर्यवर्त ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड न्यू दिल्ली वर्सेस मेसर्स M/S मेसर्स M ब्लीक S मेसर्स KAYK AARR Biscuits Private Limited 1983 Delhi.
1983 Delhi. There was a delivery of biscuits worth there was a delivery of biscuits worth rupees 1.5 crore. Worth rupees 1.5 crore. Delivery was done. Delivery was done. But the buyer did not pay rupees 55,000. But the buyer did not pay rupees 55,000. The buyer asked for extension of time. The buyer asked for extension of time. In this case, it was considered by the court that the amount was not much. 100 crore से 55,000. The court considered that the amount was not much and the conduct of the seller, sorry, buyer, and the conduct of the buyer showed that he was willing to pay. He was willing to pay. Full stop. The seller cannot repudiate. Seller cannot repudiate, but can only claim damages. But can only claim damages if the rest is not paid. If the rest is not paid. Next, section number 38. कौन सा चल रहा था ये 38 चल रहा है एक मिनट रुको 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 हाँ 38 की आगे एक डिक्टेशन है एग्जाम के बाद हाँ सॉरी हाँ 38 की ही डिक्टेशन है ठीक है The general rule is that the buyer is not bound. General rule is that the buyer is not bound to accept the delivery of goods. To accept the delivery of goods in installments unless otherwise agreed. Unless otherwise agreed. Full stop. There are two factors which are to be considered. There are two factors which are to be considered. First, the quantitative proportion which the breach bears to the whole contract second bears bears degree of probability of the repudiation of the breach next paragraph इसी के नीचे simply putting it repudiation of the breach next paragraph इसी के नीचे simply putting it comma if the failure of performance of a part of the contract goes to the root of a contract it may be considered to be a breach of the whole of it. But if the contract is divisible,
divisible, and failure to perform part of it, and failure to perform part of it is not going to affect the performance of remaining one, is not going to affect the performance of remaining one, comma, then it should be considered to be then it should be considered to be a breach only in respect of that part. एक फटाफट रीडिंग दे दो इसे, ये पैराग्राफ को. हाँ, वो मैंने भी देखा मैसेज अभी आया नोट पे. आज तो बच्चों कई लोगों ने उम्मीदें छोड़ दी थी, कहते पक्का कैंसिल हो रहा है पेपर, लगता है आंसर की नहीं दे रहे हैं. सारे बच्चे बोल रहे थे कि लगता है पक्का लीक हो गया होगा, वरना दूसरे दिन आ जाती है आंसर की. एवरीबॉडी वाज सेइंग दैट. नेक्स्ट पैराग्राफ. If there is a contract for delivery of if there is a contract for delivery of specified quantity by installment, specified quantity by installment, buyer may return the deliveries buyer may return the deliveries first made the deliveries first made if the seller if the seller fails to deliver the subsequent installments. If the seller first if there is a contract for delivery of specified quantity by installments, buyer may return the deliveries first made if the seller fails to deliver the subsequent installments. But if the buyer keeps the goods delivered, if the buyer keeps the goods delivered in the first installment, comma, then the seller can recover price for the same. Then the seller can recover price for the same. Full stop. However, he could not bring. However, he could not bring such an action. He could not bring such an action before the expiry of time for the delivery of remaining goods. For the delivery of remaining goods. Full stop. The above stated rule. The above stated rule was laid down in the case of. इस केस लॉ को प्री के लिए मार्क कर लेना. OXEUDALE. OXEUDALE. Oxidale versus Weatherall. WETHERELL. WETHERELL. Weatherall. Oxidale versus Weatherall, 1829. OXEUDALE versus WETHERELL.
Federal, 1829, by Justice Park, Parke, by Justice Park. Stop. It was observed, ये बता देती हूँ क्या रूल है. It was observed that this rule is applicable. That this rule is applicable when it is an indivisible contract for the supply of goods. For the supply of goods. However, if the contract is divisible and it is the intention of the parties to deliver the goods as per section 38 clause 2, that is delivery by installment, and each delivery to be separately paid for, comma, the seller may recover the price. The seller may recover the price of the goods delivered without waiting for expiration of period fixed for other installments. Next paragraph. The rule stated in Oxidale versus Wetherell is applicable in India as follows. Is applicable in India as follows. First point नहीं बनाना, paragraph लिखना. In case the parties agree to installment deliveries and there is a breach by seller, installment deliveries, and there is a breach by seller with respect to any delivery, then the buyer has no option to return the deliveries. Any delivery, then the buyer has an option to return the deliveries first made but in case the buyer keeps the goods कहाँ तक लिखा है रजी, एक बार बता दो मुझे, पूरी लाइन पढ़ना लास्ट. Delivered in the first installment. Then the seller cannot bring suit for recovery of price
before the expiry of time, before the expiry of time of for delivery of the remaining goods, for delivery of the remaining goods. Full stop. This is applicable in situations. This is applicable in situations where the contract is one and indivisible, and the breach did not amount to repudiation of the whole contract. In case of a divisible contract, in case of a divisible contract, that is where there is an installment delivery be separately paid for. I'll repeat that. And the breach did not amount to repudiation. Breach did not amount to repudiation of the whole contract. Seller is not required to. Then the seller is not required to wait for the expiry of period fixed for other installments, and he may file suit for recovery of he may file suit for recovery of price. File suit for recovery of price. अब ये जो पैराग्राफ मैंने आपको लिखवा दिए हैं दो तीन, एक रीडिंग से कल कर से करके आ जाना. आई एम श्योर समझ आ जाएंगे. इजी है, थोड़े से स्टूपिड से हैं, सेंस नहीं बनाएंगे, कॉन्शियस को सूट नहीं करेंगे, लेकिन वन रीडिंग इज मोर देन ऑफ मींस में क्वेश्चन नहीं आएगा. ये सिर्फ आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए पी के हिसाब से आपको जिसमें जवाब देने उसके हिसाब से. Then the seller is not required to wait for the expiry of period fixed for other installments, and he may file suit for recovery of price. इसके बाद में मैंने सिर्फ इतना ही बोला है कि ये मेंस में नहीं आता है ये वाला क्वेश्चन, मैंने नहीं देखा है, ठीक है. प्री में आता है, बट ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये पैराग्राफ दिखाए गए हैं. एक रीडिंग कराना, जहाँ पे दिक्कत आएगी कल मैं बता दूंगी, ठीक है. आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू टुमारो. ये जो 39 में जो बैराक में वर्ड नहीं, वेदर नेम्ड बाय द बायर और नॉट, उसका प्री क्वेश्चन था बस. कि अगर पर्सन ए इज नेम्ड बाय द बायर एज कैरियर और सेलर डिलीवर उसको कर देता है गुड्स, तो इज दिस अ लॉफुल डिलीवरी, ये क्वेश्चन था. आंसर इज यस, क्योंकि नेम्ड बाय द बायर और नॉट है, तो नेम्ड बाय द बायर इज द लॉफुल डिलीवरी, ठीक है. एक क्वेश्चन था, डज 39 क्लॉज 2 वर्क एज अ प्रोवाइजो टू 39 क्लॉज 1? द आंसर वाज यस. लेट मी सी हाउ 39.2 works as a proviso to 39.1. हाँ ठीक तो है, जब हमने कल जनरल रूल देखा था. एग्जैक्टली, ठीक है, मेक सेंस. ओके, उसके बाद आप आ जाइए
39 के बारे में एक पैराग्राफ लिख लो प्लीज. The use of the use of expression prima facie the use of expression prima facie is intended to raise a presumption is intended to raise a presumption when seller delivers when seller delivers the goods to the carrier for the purpose of transmission for the purpose of transmission to the buyer or delivers the goods to the wharfinger or delivers the goods to the wharfinger for the safe custody, then shall be deemed then it shall be deemed delivery of the goods to the buyer of the goods to the buyer. Full stop. The section makes मेडिसिन इतनी हैवी है, इतना ज्यादा इरिटेट कर रही है ना, आई कांट टेल यू. हाँ हाँ, मतलब रात को मैंने उनको बोला मुझे ना नींद बहुत है, डॉक्टर को बोला मुझे बहुत नींद आ रही है, आई एम स्लीपिंग फॉर 13 आवर्स स्ट्रेट विदाउट मेडिसिन ऑल्सो. बहुत हो रहा है, फटीग बहुत ज्यादा है. तो उन्होंने मुझे बोला अभी तो मेडिसिन से तो और नींद आएगी. वही बात है लिटरली, सुबह की मेडिसिन ली हुई है. आई एम क्रेजी, सो डिजी. आई कैन स्लीप खड़े खड़े ऑल्सो, इतना ज्यादा कुछ भी हो रहा है.
You are currently the only person in this conference. समझाया नहीं है, सिर्फ लिखवाया है। लिखवाने की डिक्टेशन की पिक्चर आपको भी ग्रुप पे आ जाएगी। ठीक है, कितना छोड़ना पड़ेगा मुझे लास्ट याद भी नहीं है आपने कहाँ तक लिखा है। अब मुझे बता दो प्लीज, रमित एंड प्राची कहाँ तक लिखा था मुझे लास्ट आप लोगों ने। मैं कोर्स हिसाब से जगह छुड़वा के आगे कंटिन्यू करवा देती हूँ। आप लोग सिर्फ एक क्लास हो रही है आपकी? एक एक ही लग रही है अभी क्लास? फर्स्ट पैरा ऑफ सेक्शन 39। अच्छा ओके, हो गया एक पेज, ऑलमोस्ट एक पेज हो गया। दिस सेक्शन मेक्स ओके, हाँ एक पेज ही है। ठीक है, जहाँ पे आप हम रुके थे लास्ट। ये केस खत्म कर लो जो हम लिख रहे हैं अभी। हम एक केस लॉ लिख रहे थे, उसके बीच में हम कहीं पे मेकिंग अ रेफरेंस टू द ऑब्जर्वेशन ऑफ, यही तो लिखा है ना, ऑब्जर्वेशन ऑफ लॉर्ड पॉट, रेफरेंस टू द ऑब्जर्वेशन ऑफ लॉर्ड पॉटर, लॉर्ड PORTER, पॉटर इन कॉम्पटोयर दी अचैट, कॉम्पटोयर, हाँ किसका नाम है, कॉम्पटोयर डी अचात वर्सेस लुइस डी राइडर। कोर्ट ऑब्जर्व्ड, द कोर्ट ऑब्जर्व्ड, याद करने की जरूरत नहीं है इसे बिल्कुल भी। ठीक है, द कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट द ऑब्जर्वेशन ऑफ सेलर अंडर CIF contract includes, under CIF contract includes, पहला A clause, tender of bill of lading, tender of bill of lading covering the goods, covering the goods contracted to be sold, covering the goods contracted to be sold. Second, to get an insurance policy, get an insurance policy. Third, invoice of the goods which shows the price of the goods, invoice of the goods which shows the price of the goods. Next paragraph, against the tender of these documents, against the tender of these documents, comma, the purchaser pays the price, the purchaser pays the price. So stop, the risk in the goods passes, the risk in the goods passes on shipment and possession of the goods, and possession of the goods passes when the document representing the goods are handed over in exchange of the price, in exchange of the price. अभी और भी काफी रिलेशन पड़ी है, ठीक है, इसको हम करेंगे कल। एक रीडिंग करके आ जाना, जहां जहां पे अड़ेंगे वो समझते जाएंगे साथ साथ। ठीक है, कल 40 की थोड़ी, 39 की थोड़ी सी है, फिर 40 का केस लॉ है, फिर 41 का थोड़ा सा ही है, 42 के 2-3 केस लॉ है,
44 की डिक्टेशन है, उसके बाद कल 45 शुरू होगा। कल मैं आपसे बात कर लेती हूँ, 2 घंटे की ले लूंगी, एक बार मैं बात कर लूँ, छुट्टी मिल जाए मुझे उसके बाद, वरना फिर इसी टाइम प्रॉबेबली जल्दी होगी, 90% जल्दी होगी। ठीक है एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।